Hello everybody, today I want to explain the nutrient management. In nutrient management, I want to explain the mineral replenishment because last time we have discussed the nutrient management by the micronutrients or macronutrients. Now you know that how the mineral replenishment is taking place. As you know that soil is the most important reservoir of the plant nutrients. Crop plants regularly withdraw minerals in the form of nutrients from the soil, and unless and until the minerals are replenished at regular intervals, and the crop plants will develop disorders in structures, growth, reproduction, functioning and susceptibility to diseases. Mineral replenishment is done through the addition of manures and fertilizers to the crop field. So, today we will start how we can use the manures and fertilizers. Okay. So, you know that the efficiency of the plant nutrients and organic matter in the soil is made up by adding manures and fertilizers to the soil of crop fields. Both manures and fertilizers are major sources of nutrients of plants. So, they are used in crop production. Now, first we can take the manures. What are manures? So, first we will take manures. Manures are the organic substances. Mainly manures, we can say these are the natural fertilizers. Okay, they are bulky sources of organic matter which supplies nutrients in small quantities and organic matter in large quantities. Got it? So, manure contains most probably organic matter, and manures are prepared by the decomposed animal excreta and plant waste. Manure include farmyard manure, that is FYM, compost, green manure and vermicomposting, etc. So, there will be the lot of advantages of manure also. As you know that manures affect the soil in three ways. First, how it will affect? Actually, manure enrich the soil, they replenish the general deficiency of nutrients in the soil. Since manures contain less nutrients, they need to be used in large quantities. Second, we can say that manures add organic matter. What is that organic matter? That organic matter is humus. Okay, and it will add humus to the soil and which restore the soil texture, then for better replantation of water and aeration of soil also. It will be regulated by the humus. And you know that humus is an organic matter. So, if this organic matter present in the manure, it will increase the water holding capacity in sandy soil also. Okay, and drainage in clay soil. So, they also prevent water logging in clay soil. Okay, and last is that the organic matter in manure provides food for the soil organisms like decomposers such as bacteria, fungi, which help in providing nutrients in the plants. Okay, thus we can say that organic manure help to improve the physical property of the soil, as well as it will reduce the soil erosion, it will increase the moisture capacity, or you can say moisture holding capacity of the soil, and low cost nutrient carriers. Okay. So, using biological waste material is a way of recycling the farm waste. Manure protect our environment from synthetic chemicals also. What are these synthetic chemicals? Most probably these are the fertilizers. Okay. So, what are the disadvantages of manure? So, some disadvantages of manure are also there. What are these disadvantages? Actually, manures are bulky with low nutrient content. Okay, and the nutrients get released slowly
unable to fulfill the high and rapid demand of nutrient required by improved high yielding hybrid varieties of crops. Okay. So, being bulky and voluminous, they are inconvenient to handle, store and transport. Moreover, manures are not nutrient specific also. So, hence these are not much useful when a particular nutrient is required in the soil for a particular crop. Okay. Now, types of manure also there. So, what type of manures? Farmyard manure, that are FYM. So, types of manure FYM, that is farm yard manure. Okay. FYM farmyard manure hai. So, this is the type of manure. Then you know that compost is also a type of manure. So, you can write the compost and vermicomposting also. Vermicompost or vermicomposting. So, these are the type of manure you can say, or vermicompost. Along with that you can write that green manure also. Okay. So, compost or vermicompost you can write that, and green manure you can write the next type, that is green manure. Okay. So, these are the different manures. As you know that farmyard manure FYM is the decomposed mixture of cattle dung mainly. Okay. So, cattle dung, excreta, that will be included, urine, litter, okay, and leftover organic materials such as roughage, then fodder. These are the waste materials. So, these waste materials are collected daily from the cattle shed and stored in pit for decomposition by the microorganisms. Who will decompose them? Bacteria, fungi, these will decompose. So, FYM, that is farmyard manure, contains nitrogen and phosphorus and potassium. A well decomposed farmyard manure contains about 0.5% nitrogen, 0.2% phosphorus pentoxide and 0.5% potassium monoxide. Okay. Now, next compost. How compost is prepared? Compost is prepared from farm and town refuse such as vegetables and animal refuse, that is excreta of domestic animals such as cattle, then goat, sheep, horse, donkey, camel. These are the different animals. These fecal matter of human beings also, and sewage waste materials, weeds, then crops, stubble, straw, rice hulls, then forest litter, etc. These are decomposed. So, composting is a biological process in which both the aerobic, means organism requiring the presence of oxygen for the respiration, and anaerobic, means organism in which the respiration takes place in the absence of oxygen. Okay. So, both the microorganism decompose the ऑर्गेनिक मैटर, दोनों ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ऑर्गेनिज्म और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. सो इट टेक्स अबाउट 3 to 6 मंथ फॉर डिकम्पोजिशन. कितना टाइम लगेगा? 3 to 6 मंथ लगेगा इसको डिकम्पोजिशन के लिए. ओके. ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट है दैट कंपोज कंटेन 1.14% ऑफ नाइट्रोजन, 1.0% ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड and 1.4% of potassium monoxide. So, that is the main content which is present in compost. Actually, how compost is formed? How it will be prepared? So, for preparing compost, a trench of suitable size that may be 4 to 5 meter long or 1.5 to 1.8 meter broad, okay, and 1.0 to 1.8 meter deep is dug. A layer of well mixed refuse
of about 30 centimeter thickness is spread in the trench, and this layer is well moistened by slurry. Slurry means you can say water paste of cattle dung and water, or mainly earth and water. Okay. A second layer of mixed refuse is spread in the trench till the heap rises at the height of 45 to 60 centimeter ground level, and the top of this heap is then covered with thin layer of moist earth. After 3 months, the partially decomposed biomass is taken out by the trench and collected in a conical cap. Okay. And this heap is moistened and if necessary and covered with earth. After another 1 or 2 months, the compost is ready for use in the field. Okay. Now you know that next one is vermicompost, or how vermicomposting is formed. Actually, the degradation of organic matter waste through the consumption by the earthworm is called vermicomposting. Okay. And an earthworm is a physical aerator, you know that, crusher, mixture, chemical degrader and biological stimulator of decomposition. So, in India, following species of earthworm are used for the vermicomposting. What are these? Actually, that is Dicogaster bolani, Dravida wilsi, then Perionyx, Indian species hai Perionyx, and Asania foetida, then Eudrilus, Eugenia, ये exotic species है. So these are used for vermicomposting. तो with the help of vermicomposting we can get vermicompost. तो वो भी vermicomposting से vermicompost मिलेगा आपको. Okay. Now next, green manure. How green manure is formed? Actually the practice of green manuring including growing, mulching by plowing and mixing of green crops with soil, okay, to improve the physical structure and soil fertility. Got it? A green manure crop क्या supply करेगा? Nitrogen supply करेगा, phosphorus करेगा, organic matter for improving the hydration, aeration and crumbs structure of the soil mainly. ठीक है, lump बने होंगे, crumbs बने होंगे, उसको भी improve करेगा. It tends to provide protection against the erosion and leaching. Then green manures generally quick growing leguminous and non-leguminous plants. Some examples of green manure plants are dhencha है, then sun hemp है, cluster bean है, गौड़ है, cowpea है, okay, then lentil है जिसको मसूर बोलते हैं आप. So these are the different plants. बरसीम है, ठीक है, horse gram है. तो ये green manure plants है that we are using for the green manure purpose. Our green manure crops है, these are grown in the field about 6 to 8 weeks and are over returned with the when in the tender stage, that is at flowering stage. Okay. And these crops remain buried for about 1 to 2 months. During this period what happened, the plant should be completely decomposed before sowing or next crop. Okay. Before sowing of next crop ये पूरी decomposed हो जाएगी. Then what happens, generally the crops which require high nutrient input and raised in green manure fields, such crops are rice, maize, sugarcane, cotton, wheat. So these can be grow easily and they are providing the high yield. Okay. So you can understood कि manure जो है ये organic matter है. Okay. Mainly it is known as the organic fertilizer भी बोल सकते हो आप इसको. Now opposite, इसका opposite क्या पढ़ेंगे? Fertilizer. Fertilizer chemical substance है. Actually fertilizer provide plant nutrient commercially manufactured using by the chemicals. Okay. Fertilizer supply NPK मतलब nitrogen, phosphorus and potassium. They are used for good vegetative growth, मतलब growth of leaves है, growth of जैसे stems है, okay, growth of branches है या flowers है, उनकी growth के लिए we are using. So giving rise to healthy plants we can use the fertilizers. Fertilizers are
one of the major components of nutrients in comparison to the manure. Therefore, used in very small quantity, you know that. A complete fertilizer is one which contains all the three critical elements or minerals. What are these? NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. And the fertilizers may supply one or more nutrients. These chemicals, they may be inorganic compounds, example ammonium phosphate है, ठीक है, और these organic compounds, यूरिया is also inorganic compound, तो ammonium sulfate है, and organic है वो यूरिया है. So on the basis of availability of nutrients from them, fertilizers are divided into the 4 groups. कौन कौन से 4 groups है? Nitrogenous fertilizers हैं, then phosphatic fertilizers हैं, then potassium fertilizers हैं, and complex fertilizers हैं. 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है. सो मैन्योर पता चल गया. नाउ फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस है. दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर है वो ऑर्गेनिक है, ओके. ये इनऑर्गेनिक है, मीन्स केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हो आप. दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है. सो ये डिफरेंट मैन्योर डिफरेंट टाइप में थे, फॉर्म में, कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में, या फिर मेन हम बोल सकते हैं कि दे विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट के फॉर्म में या ग्रीन मैन्योर के फॉर्म, ठीक है. और इफ़ वी कैन डिवाइड फर्दर डिवाइड द फर्टिलाइजर्स, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं. फर्टिलाइजर्स किस किस में डिवाइड हो रहे हैं? जैसे मैंने बताया आपको, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, तो आप लिख सकते हो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. Nitrogenous fertilizers. So these are the 4 groups of fertilizers. That is, you know that fertilizers are the inorganic substances, or these are formed by the chemicals. So these are the chemical substances which are used for improvement of the soil fertility. Okay, so these are nutrient specific also, but the manures are not nutrient specific. So these inorganic substances or fertilizers are divided into the 4 groups. Okay, nitrogenous fertilizer, phosphatic fertilizers, potassic fertilizers and complex fertilizers. Okay, so first is nitrogenous fertilizers. So what is nitrogenous fertilizers? Actually, these fertilizers supply the macronutrients, that is nitrogen. Okay, so it will provide the nitrogen. For example, nitrogen fertilizers are you can say urea. Okay, so urea, ammonium sulfate, calcium ammonium nitrate है, sodium nitrate है, ammonium nitrate है. So these are the different fertilizers which provide the nitrogen. So you can write here nitrogen fertilizer example urea, and the formula of the urea, you know that it is CONH whole twice. Okay, so that is diamide carbonate, CONH whole twice. Okay, diamide carbonate, this is an formula of urea. Okay, so NH2 whole twice is there, no? NH2 whole twice, diamide carbonate. Okay, so you know that urea, then I have told you these fertilizers are ammonium sulfate, calcium nitrate or ammonium nitrate also. So you can write that NH4NO3. Okay, so you can write that example A or NH4NO3. That is ammonium nitrate. Okay, so it will provide mainly nitrogen. Got it? Now second fertilizer is phosphatic fertilizer.
it means it will provide the phosphorus. Okay, so they are the sources of macronutrients, that is the phosphorus. That is the phosphorus, means phosphorus is provided by the phosphatic fertilizer. Okay, examples of phosphatic fertilizers are mainly जैसे सुपर फॉस्फेट है, ओके, देन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, देन डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है। तो एग्जांपल लिख लो आप सुपर फॉस्फेट, और लेकिन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं कई बार, तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यू राइट एग्जाम्पल हो गया ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। Okay. Now third fertilizer is potassic fertilizers. देखो नेम से ही पता चल रहा है कि these fertilizers supply potassium. As you know that is very important macronutrient. NPK, तीन nutrients बताए थे आपको। N मतलब नाइट्रोजन, P means phosphorus, K is potassium. ठीक है, तो थर्ड है पोटेशियम, ये भी एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। तो पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है ये मेनली मेराइट ऑफ पोटैश है, जिसको आप पोटेशियम क्लोराइड बोल सकते हो। तो पोटेशिक फर्टिलाइजर के एग्जांपल है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। सो एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं दैट विल पोटेशियम सल्फेट K2SO4। सो KCl एंड K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो लास्ट फर्टिलाइजर है दैट इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। एक्चुअली व्हेन फर्टिलाइजर कंटेन्स एटलीस्ट ऑफ 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, या तो उनके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा, या पोटेशियम डाइऑक्साइड या पोटेशियम मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, तो दिस दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, यानी व्हेन ए फर्टिलाइजर कंटेन्स एटलीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स सिंपल में एक ही न्यूट्रिएंट होगा, कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगी तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में नाइट्रो फॉस्फेट आ जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट होगा, देन यूरिया अमोनियम फॉस्फेट होगा। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप नाइट्रो फॉस्फेट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जांपल आप लिख लो नाइट्रो फॉस्फेट। ओके, नाइट्रो फॉस्फेट ये एग्जांपल है, नाइट्रो फॉस्फेट इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, सो ये यूरिया अमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रो फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है। जो फर्टिलाइजर्स है शुड बी अप्लाइड साइंटिफिकली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम, देन प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशंस, प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑल्सो। Okay, for example, sometimes due to the excessive water, fertilizers get washed away and do not get fully absorbed by the plants. ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर डाल देंगे हम तो पानी के साथ में वो वॉश हो जाएंगे, तो प्लांट्स अब उनके एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो फर्टिलाइजर्स जनरली गेट वॉश्ड ऑफ थ्रू इरिगेशन है, या फिर रेनफॉल है, और एज ए ड्रेनेज सिस्टम एंड पॉल्यूट रिवर्स ऑल्सो। जब वहाँ से जाएंगे वॉश ऑफ होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, रिवर सिस्टम में पहुँचेंगे, रिवर्स को पोल्यूट करेंगे, लेक्स को पोल्यूट करेंगे, स्ट्रीम्स को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो इससे एल्गल ब्लूम भी हो सकता है, एल्गी बहुत सारी आ जाएगी, और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसके अंदर रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर दे कैन डाई ऑल्सो ड्यू टू द सफोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं हम, यूट्रोफिकेशन। जो एल्गल ब्लूम हो जाता है, जो पूरा कवर कर जाएगा एल्गी से पॉन्ड कंप्लीटली, तो उसको बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन भी हो जाएगा एंड इट विल डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, सो द वाटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑल्सो। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर है वो मिक्स हो गया है, एंड इवन किल्स द एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेज हैं या टोड्स हैं, इनको भी ये किल कर देगा। ओके, सो केमिकल फर्टिलाइजर्स मस्ट बी यूज केयरफुली एंड जुडिशियसली। ठीक है,
इनको हमें केयरफुली ही यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट जो है अपना ये 4 हो गए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हो गए। नाउ बायो फर्टिलाइजर्स सुने होंगे, एक्चुअली ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो कि एनरिच करते हैं हमारी न्यूट्रिएंट जो चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स को हमें हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट्स सच एज पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, राइस है। बायो फर्टिलाइजर्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटेंट सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। They are not alternative to chemical fertilizers but can play a supplementary role for supplying the nitrogen to specific crops under specific soil conditions. Nitrogen fixing microorganism, you know that. Non-symbiotic and symbiotic cyanobacteria and phosphate solubilizing microorganisms. Okay. These are the main type of biofertilizers that are being used in India. Recently 2 biofertilizers namely Rhizobium cultures and blue-green algae just such as Anabena and Nosta that have gained popularity among the farmers cultivating pulses, legumes, oil seeds and wetland rice. पता है ना आपको, I have told you कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, पल्सेस हैं, ठीक है, देन पी है, ग्राउंडनट है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है कि दे कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड व्हाट दे विल डू, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, सो राइजोबियम बैक्टीरिया व्हाट इट विल डू, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इट विल जस्ट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट्स में यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देगा एंड दैट कंपाउंड्स विल बी प्रेजेंट इन द सॉइल, सो दैट विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से दे आर यूजिंग बाय द प्लांट्स। दूसरा माइकोराइजा, माइकोराइजा सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है सर्टेन फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स एंड इंक्रीज ग्रोथ विगर एंड यील्ड ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। तो लास्ट वन है वो माइकोराइजा है। नाउ नेक्स्ट जो हम लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है वो दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, आपको पता है कि इरिगेशन मीन्स वाटरिंग और सप्लाइंग वाटर इन द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। जो क्रॉप प्लांट्स हैं गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, यू नो दैट, एंड सॉइल ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम द रेन। हाउएवर sufficient rain is not always available, then what happens, therefore the soil is not able to supply that sufficient water of crops. At last I would like to say thank you and have a nice day.